Okay, so I generally did not plan on disappearing for like 7 months. And ऐसा नहीं है कि मैंने YouTube quit कर दिया. I had like ideas on Notes app. I wrote the title, I wrote the script, but somehow I just did not execute it. I think life happens, yaar. And somewhere along the lines, I lost the motivation to actually sit down, make a video, upload it. So aaj, instead of pretending like nothing happened, let's just talk about what's been up. First of all, if you're still subscribed, thank you dil se. I really appreciate you guys. Last time जब हम consistently upload कर रहे थे, we reached like 600 subscribers and I'm so grateful to each one of you. I think that's a huge number. Honestly, मुझे पता भी नहीं था if I was gonna come back and upload anything. And it's crazy because I would just keep telling myself I'm gonna post next week, and now अब 7 महीने हो गए and I haven't posted anything. But I think I've realized कि मैं ना वो motivation ढूंढ रही थी to start creating again, but somehow वो motivation नहीं आ रही है यार. वो नहीं आएगी कभी भी. I just have to start. So what exactly happened in 7 महीने में? I got a job. One of the biggest things is I started working again, guys. I worked at the jewelry company. Jewelry as a category was like completely new for me. मैंने बहुत कुछ सीखा like about diamond, carat size, color, cut, clarity. ये सब मुझे नहीं पता था, but अब मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर कोई मेरे लिए रिंग लाएगा, कौन सी रिंग मुझे लेनी चाहिए. Working in India was just a whole different experience for me, especially because मैं 6 days a week काम कर रही थी, guys. 6 days a week. And coming from Canada, वहाँ पे जब you're like 5 days working, थोड़ा बहुत work-life balance है, to working 6 days a week, I think थोड़ा तो मेरे लिए it was a little bit of a adjust. Eventually I realized ये lifestyle मेरे लिए तो है नहीं, तो मैंने job छोड़ दी. I worked there for like 4 months, and that's when I started to ask again, अब क्या करेगी भाई तू? हर चीज तो तू छोड़ देती है. नाउ व्हाट आर यू गोना डू? बिकॉज मैं खाली तो बैठ नहीं सकती. आपको पता है मैं से खाली नहीं बैठा जाता यार. जो मर्जी करो बट कुछ करते रहो. डिप्रेशन उन लोगों को हिट नहीं कर सकता जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं. दिस इज वेयर आई काइंड ऑफ हैड लाइक अ हार्ड रियलाइजेशन. सो इफ यू डोंट नो, आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई वाज 18. अब जब भी मैं जॉब अप्लाई कर रही हूँ, एवरीवन नीड्स अ डिग्री. डिग्री इज समथिंग लाइक दैट्स द बेयर मिनिमम. दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड कि यार, मे बी आई शुड जस्ट गो बैक टू स्कूल. मे बी आई शुड फिनिश माई डिग्री. सो आई एम बैक at a university. I'm finishing my bachelor's degree, BCom honors. मेरा second year complete हो गया actually. And then it hits you, bro. Like I don't even have the basic qualification to enter into jobs. Like मेरे पास वो है ही नहीं. So I'm finishing that. Next year I'll be graduated. But hey, I'm doing it. Like I feel like there is no age for education and nobody can take education from you. चाहे उससे मुझे कुछ मिले ना मिले, I think एक mental satisfaction मिल जाएगी कि मैंने वो चीज़ complete करी. And that's why back in university at 28, which feels crazy to say. You know क्या हुआ मेरे साथ? उन्होंने सेकेंड ईयर रिजल्ट में दे मार्क्ड मी एब्सेंट इन वन ऑफ द एग्जाम्स दैट आई गिव, एंड वो सबसे अच्छा हुआ था मेरा एग्जाम. किस्मत इतनी फूटी हुई है ना कि मुझे आई हैड टू गो टू द नॉर्थ डेल्ही यूनिवर्सिटी कैंपस. आई हैड टू टेल देम कि दिस इज माई अटेंडेंस शीट. भाई देखो मैंने एग्जाम दिया है. इट टुक लाइक 2 months फॉर देम टू करेक्ट इट, एंड आई जस्ट हैड एंग्जाइटी बिकॉज उस पर ER लिखा आ रहा था, विच मेंट लाइक यू हैव टू री अटेम्प्ट द एग्जाम बिकॉज आप एब्सेंट थे. आपने तो एग्जाम दिया ही नहीं, तो आपको तो ये री अटेम्प्ट करना पड़ेगा. एंड देन दे करेक्टेड इट, बट आई जस्ट हैड टू गो बैक एंड फोर्थ टू यूनिवर्सिटी सो मेनी टाइम्स, एंड आई जस्ट हैड दिस ट्रिपलिंग एंग्जाइटी कि यार ये ठीक करेंगे भी या नहीं, बिकॉज है तो ये सरकारी ही ना. बट इवेंचुअली इट्स ऑल सॉर्टेड एंड आई एम कंटिन्यूइंग माई डिग्री. एंड 2 semesters रह गए. 1 semester in January I think, and the next one is June, and then I'll be done. But if I'm being completely honest, I think job is not the only reason that I stopped posting. University भी reason नहीं है. I think I just lost the motivation, and somewhere along the lines I just couldn't do it. Career में क्या करना है, education में क्या करना है. I was just making so many decisions. I think I was just trying to have my whole life figured out before I allowed myself to make content again. And that's probably my mistake. Because the reality is, I think अब मुझे figure out करना ही नहीं है यार. अब मेरी figure out करने की उम्र चली गई. Still trying to figure out कि मेरा career क्या हो सकता है. तो मैंने अब इतना pressure डालना बंद कर दिया है. Maybe now I don't need to wait until everything is perfect to start documenting it, you know. I'm just gonna document it regardless. So that's what I want to do with this channel now. I'm gonna take you guys with me in that process. Good decision हो, bad decision हो, India रहना है, नहीं रहना, whatever it is, मुझे नहीं पता. But तुम लोग आ रहे हो मेरे साथ. I'm just figuring it out as I go. And one more thing that I wanted to say, I am preparing for GMAT. मतलब मैं, तुम्हें पता है ना, मैं खाली नहीं बैठ सकती. तो I've been studying for GMAT. 1 महीना हो गया. I got like private tutoring. And yeah, verbal and quant के बहुत questions है जो मेरा mind कर रहे हैं. But ठीक है यार. Like I feel like मुझे अपने आप को difficult situation में डालने का शौक है. And with quant questions, I feel like it's just helping me build my analytical skills because वो logical questions है. अगर तुम्हारा brain actually logically इतना अच्छा है, you're gonna be able to answer it real quick. But मेरे को एक question करने में 100 घंटे लग रहे, not 100, but like मेरे को एक question करने में बहुत time लग रहा है. तो it just makes me
it humbles me कि यार तू इतनी perfect नहीं है. There's a lot of things you don't know. There's a lot of things you still need to learn, and that's why I'm studying for it. But let's see how that goes. अभी मेरा goal सिर्फ GMAT पढ़ने पे है, आगे का process बाद में देखें. So if you have seen my Canada videos, thank you guys for sticking around. And if you're new, then most welcome. My name is Divya. I don't know exactly where this chapter is going to take me, but maybe that's the fun part. I'm not here because मेरी life पूरी figured out है. I'm here because I am figuring it out. And if you're doing the same, I hope you stay. Thank you so much for watching. See you in the next one.